Dear subscribers, dear students, as my per member promise, I told you already that I will upload a video on the matter of International Criminal Court and its jurisdiction that have been challenged by various developed countries like America, like UK and Israel itself. They are challenging the jurisdiction of the International Criminal Court on the matter of international conflict that is going on in Israel and Gaza. Firstly, this video will explain you how and when establishment of International Criminal Court happened and what were its mandate. And according to that mandate, where International Criminal Court stands for solving or investigating the matter of Gaza. International Criminal Court is established under Rome Statute और Rome Treaty, इसको Rome Treaty भी कहते हैं. International Criminal Court Rome Statute के मुताबिक establish हुई 1998 में and immediately were ratified and signed by 123 member states. ICC is a judicial intergovernmental organization that headquarters is in The Hague. The court is a permanent institution that exercises jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern. That court deals with those persons who have been doing very stark humanitarian violations of international law. That court take to the task to those persons who have been involving in humanitarian crisis. Rome Statute of International Criminal Court explains the authority of International Criminal Court that says the ICC has the authority to prosecute those accused of genocide, crimes against humanity, and war, crimes on the territory of states party to the Rome Statutes, its founding treaty. These underlying words I will explain in the next video that what is the purpose of this underlining these lines, these words that is very much particular, very much concerned with the jurisdiction of the state, jurisdiction of the International Criminal Court, that International Criminal Court deal with those crimes and those crimes are being committed by the against the states who are the party of the International Criminal Court Rome Statute. तो जो कि रोम स्टैट्यूट को साइन कर चुके हैं, जो कि रोम स्टैट्यूट्स के मेंबर हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर बन चुके हैं पार्टीज और स्टेट्स, उनकी टेरिटरी में वायोलेशंस हो रही हैं, उसको टेकअप करना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है. आई कैन एक्सप्लेन हियर नाउ. ICC and its mandate, इसका mandate क्या है? The court will prosecute the most serious crimes that are of concern to the international community. These are crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes. It has been proposed that the court should prosecute the crime of aggression, but the state parties have yet to agree on a definition of this aggression, कि aggression किस category में वो fall करेंगे. International Criminal Court ने क्या करना है? What is the court designed to do? कोर्ट ने क्या करना है? Again, repetition हो रहा है, लेकिन but make it this point very clear that to prosecute and bring to justice those responsible for the worst crimes, genocide, crimes against humanity, and war crimes. Must keep in mind that these crimes are not only crimes which comes under the International Criminal Court purview, but these are the basically international law violations जो कि acceptable नहीं है किसी भी तरह से international law को. And second is that it is a court of law, last resort. ये एक ऐसी court है जो कि you can say like हमारे कंट्री के अंदर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट रिसोर्ट, फिर उसके बाद आखिरी जो कोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट होता है, जो कि अगर किसी को एग्जीक्यूशन की सजा है तो वो उसको उम्र कैद में बदल सकता है, यानी मर्सी की अपील जो है, लास्ट अपील जो होती है वो फिर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है. बट द कोर्ट, सो फार एज द कोर्ट इज कंसर्न, हमारे मुल्क में कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है. इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर क्राइम्स, इंटरनेशनल क्राइम हुए हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो दैट इज द लास्ट रिसोर्ट जो होता है, लास्ट कोर्ट जो होती है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होती है, जो इंटरवीन करती है ओनली
when national authorities cannot or will not prosecute। ये भी लाइंस मैंने अंडरलाइन की हैं। ये वो लाइंस हैं जो आगे आपको चल के मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगी कि इन लाइंस की वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस स्टैंड पे अपने आप को देखती है। 2 points of reference interference of ICC in conflict or war। अगर हमने जो मैंने मैंडेट पीछे बताया आपको और जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसके मुताबिक 2 पॉइंट्स सामने आते हैं व्हेन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स। नंबर 1, स्टेट पार्टी और एनी स्टेट पार्टी नेशनल्स आर बीइंग अफेक्टेड। एक ऐसा जुर्म हो रहा है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, एक ऐसी रियासत के अंदर ये सब चीज कुछ हो रहा है जो रियासत जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबर है और उसके या वो मेंबर नहीं है तो उसके नेशनल्स जो है वो उसकी उनकी वजह से उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उस वॉर की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉज और फर्स्ट मैटर और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस दैट अलाउज इंटरफेरेंस बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। And the second principle is when national authorities or courts are not taking or are unable to prosecute the perpetrators of इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइम, कि अगर नेशनल कोर्ट्स जो हैं वो उस परपिट्रेटर्स को जो क्रिमिनल्स हैं उनको टास्क टेकन टू टास्क नहीं हो सकता, उस वो नहीं उनके खिलाफ कुछ कर सकती, तो देन इट इज द मैटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू टेक द मैटर इनटू इट्स ओन हैंड्स। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स को के अगर मैं हिस्ट्री में जाती हूँ तो मैंने ये देखा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पास्ट में भी अरेस्ट वारंट्स इशू किए हुए हैं। दैट शोज उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। द कोर्ट हैज़ एन आउटस्टैंडिंग अरेस्ट वारंट ऑफ सूडानीज प्रेसिडेंट उमर अल बशर द फर्स्ट अगेंस्ट अ सर्विंग हेड ऑफ द स्टेट। ये एक ऐसा अरेस्ट वारंट था जो पहले सर्विंग प्रेसिडेंट किसी भी हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ जो है वो आईसीसी ने इशू किया। When Mr. Bashar, who faces 3 counts of genocide, 2 counts of war crimes, and 5 counts of crimes against humanity, was committed by Bashar al-Assad, and 5 counts of crime against humanity, and then that Bashar al-Assad, when he went on attending on African Union Summit in South Africa in June 2015 में जब वो साउथ अफ्रीका में साउथ समिट को अटेंड करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे साउथ अफ्रीकन कोर्ट ऑर्डर करती है दैट ही बी प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग द कंट्री, कि इसको इस मुल्क से नहीं जाने देना। while it decided whether he should be arrested under the ICC वारंट, के आईसीसी ने वारंट इशू किए हुए हैं और उस वारंट के मुताबिक साउथ अफ्रीका से इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो हर मेंबर कोर्ट के ऊपर हर मेंबर जो कंट्री है उसके ऊपर ये लागू होता है कि वो अगर कोई कल्प्रेट जो है, कोई परपिट्रेटर जो है वो उनके स्टेट में आया है, whosoever it is, उसका कोई भी स्केल है, उसका कोई भी लेवल है, उसका कोई भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उसका स्टेचर है, उसको वो अगर उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं तो वो जिस भी मेंबर स्टेट में जाए बाय चांस और बाय समथिंग तो वो उसको गिरफ्तार करने की जो है वो पाबंद है। तो साउथ अफ्रीका ने के कोर्ट ने इसलिए ये ऑर्डर्स बशर अल असद के खिलाफ जो है इशू किए। एक और जो है वो वारंट जो है, अरेस्ट वारंट जो है वो इशू हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 17 मार्च 2023 में अरेस्ट वारंट किए हैं व्लादिमीर पुतिन द रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ एंड मारिया लोवा बिलोवा रशियन कमिश्नर फॉर चिल्ड्रन राइट्स। इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम था, मारिया जो रशियन कमिश्नर थी चिल्ड्रन राइट्स की, उन्होंने अलेजली रिस्पॉन्सिबल करार पाई हैं फॉर द वॉर क्राइम्स ऑफ अनलॉफुल डेपोटेशन एंड ट्रांसफर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। कि रशियन ने जब यूक्रेन में इन्वेड किया है तो उसके बाद बच्चों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया, ट्रांसफर किया गया अनलॉफुली। इसके लिए रशिया की जो कमिश्नर हैं चाइल्ड राइट्स की उनके खिलाफ और अमेरिका रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उसके खिलाफ 17 मार्च 2023 को अरेस्ट वारंट इशू हो चुके हैं। This is the first time that ICC issued arrest warrants of a permanent member of the United Nations। ये एक ऐसी नई चीज़ है कि जैसे कि उन्होंने सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ बशर अल असद के खिलाफ जब अरेस्ट वारंट इशू किए हैं, सेम वे दिस इज रशिया इज द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड दिस इज वाज द काइंड ऑफ फर्स्ट वारंट अरेस्ट वारंट ऑफ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और इसमें तमाम मेंबर स्टेट्स आर obliged that if the Russian President Putin or Maria Belova set foot in their territory, जैसा कि बशर अल असद ने साउथ अफ्रीका में सेट फुट किया तो वहाँ के साउथ अफ्रीकन कोर्ट ने उसके अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट कराने के ऊपर आ गई। तो सेम वे में तमाम मेंबर्स कंट्रीज आर obliged कि अगर ये उनकी कंट्री में उनकी टेरिटरी में
आते हैं, they have to detain and transfer them. This is the short introduction of International Criminal Court. अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें आपको मैं इसी चीज़ों को लिंक करूँगी, इसराइल की जो सिनेरियो चल रहा है और रशिया जो गजा में जो है सिचुएशन जो है वो इस वक्त चल रही है, और उस सिचुएशन को किस तरह से जो है वो टेक किया जा रहा है बाय द developed countries, by Israel itself and by the International Criminal Court. और उसमें मज़े की बात ये है कि ये भी देखना है कि हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं उनमें किस हद तक उन्होंने इसके ऊपर रोल प्ले किया है, एंड हु आर द मेंबर स्टेट जो जिन्होंने इसराइल के खिलाफ गजा में होने वाले मामलात के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में अपनी एप्लीकेशन जमा कराई हैं। उन कंट्रीज़ के बारे में मैं जिक्र करूँगी आपको। तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इसके जुरिसडिक्शन के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है वो very soon I will upload it. I again request all of you to kindly forward this introductory video to all, and so maximum can take benefit of this lecture, and wait for my next video that will be about the jurisdiction of the International Criminal Court that has announced that it will investigate the matters that are going on in Gaza, and all the international humanitarian laws violations are going on, that will be taken strictly against Israel and against those who are doing all these activities or war crimes or things. And the next very important thing that I will discuss in the that next video will be the idea of self-defense that that have been promoted or presented by the Israel, that whatever is being taken, whatever is being done in Gaza is either self-defense in Israel, is doing by Israel के self-defense में ये सब कर रहा है। तो उसके बारे में बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि व्हाट इज self-defense, और self-defense भी कोई ब्लैंक चेक नहीं होता कि जितना भी आपको दिल चाहे, जिस तरह से आपका दिल चाहे जो है वो उसको यूज करें। सेल्फ डिफेंस का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो आपको देता है, उसको भी ब्लैंक चेक समझकर यूज नहीं करना। उसके ऊपर भी कुछ लिमिट्स होते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।